Hey guys, so I'm Dilpreet Kaur and you're welcome to my channel. So the two materials that we'll need to make the hand wash will be glycerine, and make sure that you see the expiry date of the glycerine, and any of the soap. Here I'm using Johnson's baby soap. The next you will need is the grater, and इसमें जैसा आप देख सकते हो अलग अलग sizes हैं. So we have to use the wide side, जिससे सबसे ज़्यादा बड़े parts हों soap के. That side we will be using, and this is gonna be the output for us, as you can see in the plate. Next you gotta take is a pan and keep it on full flame so that वो boil होना start हो. Once it starts boiling, you need to put the grated soap into it. So leave it for around about 10 minutes and continuously आप उसको बीच बीच में stir भी करते रहिए so that वो lumps form ना करे. Automatically वो एक liquid consistency ले लेगा. As you can see here, it is gonna form a liquid consistency. You have to keep it as it is, like ताकि वो cool down हो जाए for about 24 hours. Meanwhile आपको जो ग्लिसरीन है, you have to add some amount of glycerine when it is hot, so that एक moisture वो आपके हाथों को देगा. For that we are adding glycerine here. And now it is time to leave it to let it get cool. Leave it for about 24 hours in your kitchen. And as you can see here, this will be the thickness, the thick consistency it will form after 24 hours. So as you can see, this is the container जिसके अंदर मैं ये pour करने वाली हूँ. You can use a funnel basically, जो कि easiest way रहेगा हैंड वॉश को उसमें डालने का, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है. So मैंने मेरा यहाँ पे कंटेनर भर लिया है और अभी भी मेरे पास ये हैंड वॉश लिक्विड बचा हुआ है, जिससे मैं दूसरे कंटेनर में भी पोर कर सकती हूँ, डाल के रख सकती हूँ. अगर आप लोगों को ये DIY पसंद आया है, सो जस्ट गिव इट अ लाइक बटन, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज़, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइल मंत्रा. आई होप यू गाइज विल फॉलो मी देयर. थैंक यू सो मच. सी यू इन द अदर वीडियोज़.